Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 24th of September. The session will be quite interesting, so stay tuned till the end. In this video a total of 17 important current affairs will be discussed. Here we will be talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to Jharkhand, Gujarat and Odisha. Then we will be talking about integrated ocean energy atlas of INCOIS that has been recently unveiled. Then we will be talking about PF withdrawal limit that has been increased to 1 lakh rupees, that was earlier 50,000 rupees. PF is your provident fund. Then we will be talking about India Kuwait ties. We will be talking about IDFC First Bank Limited. They have launched Ashwa and Maurya credit cards. We will be discussing them in detail. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one-stop solution for current affairs. The content we provide on daily basis is top-notch. It is very interesting and provided in a very simplistic way so that it becomes easy for you to understand and grasp the concept of daily current affairs. Also, the content that we provide on daily basis is uploaded at 5 a.m. in the morning, and the content here is very important as it will be very beneficial in your competitive exams. Also students, share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, even with your parents, and let them know about this interesting platform. Instead of reading newspaper daily, they can just go through the video and they will be getting ample information on daily basis. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs. We are talking about Prime Minister Narendra Modi. This is his third consecutive term as the Prime Minister of India, and this is the 18th Lok Sabha. Right, so PM Modi was on a visit to Jharkhand, Gujarat and Odisha from 15th to 17th of September. During this, there are some important things. First is he has flagged off the Tatannagar Patna Vande Bharat train at Tatannagar Junction railway station, that is in Jharkhand. First thing. Second, Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone and dedicated to the nation various railway projects worth more than 660 crore rupees in Tatannagar, Jharkhand. Then third is PM Modi flagged off 6 state-of-the-art Vande Bharat express trains here. Then fourth, PM Modi inaugurated the second phase of the Ahmedabad Metro Rail project and the fourth Global Renewable Energy Investors Meet and Expo, that is Reinvest. Fifth, PM Modi virtually flagged off India's first Namo Bharat Rapid Rail between Ahmedabad and Bhuj from the Bhuj railway station. Correct? Take a note of this. One more thing you remember here, PM Modi has launched Subhadra. What is Subhadra? This is the flagship scheme of the government of Odisha, right? And if we talk about this Subhadra scheme, correct, as it is the scheme of Odisha, this is a women-centric scheme. This will be covering more than 1 crore women. Under the scheme, all the eligible beneficiaries between the age of 21 to 60 years of age will receive 50,000 rupees over a period of 5 years, that is from FY25 till FY29. Right, so from this 5 periods they will be receiving a total of 50,000 rupees who are between the age of 21 to 60 years of age. So we can say 10,000 rupees each year will be provided, and this 10,000 amount will be provided into 2 equal installments every year. So this is your Subhadra scheme, that is of state government of Odisha. Right, so these are some important things that has been launched. Moving on, next is Ministry of Earth Science.
Secretariat M. Ravichandran has unveiled integrated ocean energy atlas of INCOIS. Now, first of all, what is this atlas? Atlas is basically a map, right? It is basically a map that contains the boundaries, the locations, right? The data about the particular geography of our country, right? Or basically world, right? We are talking about our India here, as you can see it in the picture here, correct? So Dr. M. Ravi Chandran, who is the secretary of the Ministry of Earth Science, he has launched this integrated ocean energy atlas of the exclusive economic zone, correct? And this is of INCOIS. INCOIS here stands for Indian National Center for Ocean Information Services, correct? This integrated ocean energy atlas will showcase the renewable energy potential that is within the India's exclusive economic zone. This is your exclusive economic zone, right? And this particular atlas will talk about the potential of renewable energy in this special economic zone, or in this exclusive economic zone, right? So in this area, the amount of renewable energy that is present, that can be harnessed by our India, is showcased here, because this is Andaman and Nicobar Islands, so this area is also marked here, and this is the map of this particular area, correct? This will include energy sources such as your wave energy, tidal energy, currents energy, ocean thermal energy, right? These energies are considered here. Take a note of this. If we talk about INCOIS, who is the director here? Dr. T.S. Kumar, headquartered in Hyderabad, Telangana, established in 1999. Moving on. Next, Ministry of Labor and Employment has increased the Provident Fund withdrawal limit to 1 lakh rupees, that was earlier 50,000 rupees. I repeat, Dr. Mansukh Mandviya, who is our Union Minister of Labor and Employment, has announced that now the subscribers of EPFO scheme, that is Employees Provident Fund Organization, they can withdraw up to 1 lakh rupees from their Provident Fund accounts for their personal finance needs. And earlier this limit was 50,000 rupees, and now it has been increased to 1 lakh rupees. Also, he has announced that the employees who have not completed 6 months in their current job are now eligible to withdraw the amount, because earlier they must complete at least 6 months before withdrawing this amount, but now this limit has been removed, correct? Next, also one more thing has been proposed here. He stated that the government of India, he informed the government of India that the employee EPFO ceiling that was earlier 15,000 rupees is now being considered to be increased to 21,000 rupees. So right, this is under proposal, that is not fixed, right? A law has not been passed on it, but it is under consideration. Moving on. Next, here if we look at some of the key facts also, it is mandated for the companies with 20 or more employees to contribute to these provident funds under this Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act of 1952. This includes a deduction of minimum of 12% of an employee's salary, with the employer also contributing additional 12%. Also at present, EPFO is giving 8.25% interest rate on the savings for the financial year 25. If we talk about EPFO, who is the Chief Executive Officer? Neelam Shami Rao. Next is international affairs. We are talking about India-Kuwait ties, right? So from India, remember New Delhi-based ICCR, that is Indian Council for Cultural Relation, and the Gulf University for Sciences and Technology, that is GUST in Kuwait, they together recently signed an MOU to establish ICCR's first chair of Indian Studies in Kuwait that will focus on Hindi language teaching there. I repeat, ICCR's first chair of Indian Studies in Kuwait will be established, for which an MOU has been signed between Indian Council for Cultural Relations from India and Gulf University for Science and Technology from Kuwait. And this MOU will basically set up ICCR's first chair of Indian Studies in Kuwait that will promote teaching on Hindi languages, right? So we can say this will promote the usage of Hindi in the Kuwait area, as there are multiple Indians residing in the
Kuwait. Next is the Saudi Data and Artificial Intelligence Authority and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. They have recently announced a classification of the International Center for Artificial Intelligence Research and Ethics as a Category 2 center under the UNESCO during the 3rd Global AI Summit held in September from 10 to 12th of September held in Riyadh, Saudi Arabia. Right now this center, correct, ICAIRE has been declared as Category 2 center. What are these Category 2 centers basically? These C2 centers, they are basically organizations that operate under the UNESCO's guidance and support. Correct? And the member state in the locations where C2Cs are located fund them directly. Apart from this IC, remember, direct thing question can be asked that this ICAIRE, that is International Center for Artificial Intelligence Research and Ethics, has been declared as C2C center under UNESCO. And what is this? C2C basically center, Category 2 centers that support AI research and development, right? So we can say this ICAIRE that will focus on research and development in artificial intelligence, and it will be working and operating under the guidance of UNESCO. Next is banking and finance. IDFC First Bank Limited, they have launched Ashwa and Maurya credit cards. So two types of credit cards has been launched here, Ashwa and Maurya. They are the premium segment credit cards that has been launched here. This first Ashwa credit card, this is a metal credit card that will be powered by Visa, right? And this is basically for providing luxurious experience to their customers. And this Maurya, this is a premium metal credit card, correct? This is specifically based on the peacock. Maurya means peacock, right? As you can see on the right here, this is your Maurya, and on the left is Ashwa credit card. If we talk about IDFC First Bank Limited, who is the managing director and chief executive officer here, V. Vaidyanathan, headquartered in Mumbai, Maharashtra, and there is a tagline for this bank that you can remember, tagline being always you first, and it was established in 2018. Next is RBI has approved the reappointment of V. Vaidyanathan as the Managing Director and Chief Executive Officer of IDFC First Bank Limited. Directly remember it, right? Because we saw about him, we were talking about him recently, and here you can see in the picture, he has been recently reappointed for next 3 years, and he will be in this position till 18th of December 2027 until any further orders. Next is Asian Development Bank has approved $50 million loan for water resource management and climate resilience in the state of Meghalaya. I repeat, it is Asian Development Bank, right? They have approved $50 million loan, right? This is a loan amount, correct? And it is for the various water resource management there, correct? So that we can strengthen the ecosystem there, correct? The water that is provided to the people are clean. Also, they can collect the rainfall also. And if there is a flood, proper management of water resources, then we can see that the floods in that areas can also be prevented, and even during the dry seasons that water can be used sustainably, correct? So Asian Development Bank, they have provided $50 million loan for water resource management in the state of Meghalaya. This project will involve construction of 532 water storage facilities across the 12 districts of Meghalaya. They will be development of more than 3,000 hectares of area that will ensure reliable irrigation for the farmers using the water that will be collected. Also, micro irrigation systems will be introduced to tribes such as Garo, Khasi, Jaintia. Right? These are the tribes that are found in Meghalaya. Right? Moving on. Next is SEBI has amended issue and listing non-convertible security rules to streamline the public issuance of debt securities, right? So SEBI, they have amended these regulations in the exercise of their power given under the subsection 30 of the SEBI Act of 1992. This amendment basically aims to streamline the process of public issuance of the debt
securities. This will also simplify the disclosure requirements that will provide fast access to the funds for such issuers. If we talk about this, here the key changes that you should be focusing on is this will reduce the timeline. As per these new laws, the SEBI has reduced the time period for seeking public comments on the draft offer documents from 7 working days to 1 day for issuers whose specific securities are already listed on the exchanges with nationwide terminals, and 5 days for other issuers. Then use of working mode for advertisement. As per the revised rules, the issuers have now discretion with regard to advertise of public issue through electronic mode subject to window advertisement containing working QR codes, link to full advertisement in newspapers also. Then next is eliminate the need of PAN, that is your permanent account number in offer documents, right? So as per these rules, the non-convertible securities, correct, I repeat, as per the new rules, SEBI has simplified the disclosure requirement for these non-convertible securities in offer document by eliminating the requirement of this PAN number here, correct. So these are some of the new guidelines that has been launched by SEBI. Next is SBI sanctions the thermal project loan worth 10,050 crore rupees to DVC to develop 1,600 megawatt USC TPP in Kodarma district of Jharkhand. What is this USC TPP? This is your ultra supercritical thermal power project. Here you can see ultra supercritical thermal power project. So it is State Bank of India, that is a public sector bank. They have sanctioned a loan worth 10,550 crore rupees to Damodar Valley Corporation that will develop this ultra supercritical thermal power project that will have a capacity of 1600 megawatt, and where this will be developed, it will be developed in the Kodarma district of Jharkhand. So the location is also important, correct. Among this 1600 megawatt of this project, remember there will be 2 units of 800 megawatt each that will be developed here, and this project will add the renewable energy capacity by 2030. Moving on, next is economy and business. S&P Global report that India is on the track to become the world's third largest economy by FY31 and projected an annual growth of 6.7%. I repeat, as per the data released by S&P Global, India's forward economy emerging perspective, this is the name of the report that was released by S&P Global. It stated that India is on the track to become the third largest economy in the world, and there will be a transition to the upper middle income category by the FY31, and there will be a projected annual growth of around 6.7% annually. Also, India's GDP grew by an impressive of 8.2% last fiscal year, that is FY24, and it also expect to grow at 6.8% in this fiscal year, that is FY25. If we talk about S&P Global, where is the headquarter? New York, USA. Next is Karnataka, Gujarat and Tamil Nadu. They are the biggest gainers from the 1990s reforms as per the data released by EAC of Prime Minister, that is your Economic Advisory Council to the Prime Minister. Right, they have recently released, that is Economic Advisory Council to the Prime Minister has released a working paper that stated that the economic reforms that were held in 1990, for them the best benefit was taken by these 3 states, that is Karnataka, Gujarat and Tamil Nadu. And in this, these states are the biggest gainer in terms of GDP and relative capita per income, correct, or relative per capita income, right? So Karnataka, Gujarat and Tamil Nadu, these are the biggest gainers from 1990 reforms of, right, and in terms of GDP and relative per capita income as per the data released by Economic Advisory Council to the Prime Minister. Then let's compare it using a chart here. You can see Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra and UP and their increase in the GDP share, right? Next
Next, we are talking about awards and recognition. Bollywood producer Vinod Bachchan honored with Global Prestige Award at the UK Parliament. I repeat, who has been honored with Global Prestige Award? As you can see him in the middle here, he is Vinod Bachchan. He is a Bollywood producer and he was honored at the House of Lords in UK, correct, for his outstanding contribution in the Indian film industry, right, because he promoted Indian culture and also strengthened the cinematic ties between India and UK, particularly at the global stage, correct. And this award, that is Global Prestige Award, this is given to individuals who have made significant contribution in their particular field. Next is appointments and resignations. Jitendra J. Jadhav assumed the charge as the Director General of Aeronautical Development Agency, and he has been holding the additional charge of the Program Director of Combat Aircraft and Director of the ADA since September 2022. Correct? Apart from this, next is important days. International Day of Peace is observed on 21st of September, and it is to commemorate and strengthen the ideals of peace both within and among all the nations and people. Then there is a theme for this that you can remember: cultivating a culture of peace. And this 2024, it marks the 25th anniversary of United Nations General Assembly's adoption of Declaration and Program of Action on a Culture of Peace. And it was 1989 that United Nations General Assembly adopted a resolution to declare 3rd Tuesday of September, coinciding with the opening day of the regular sessions of United Nations General Assembly, as the International Day of Peace, and the first ever International Day of Peace was observed in 1982. Next is World Alzheimer's Day. It is observed on 21st of September. Alzheimer is a disease, or we can say it is a disease in which a person starts having memory loss, correct. And this day is observed on 21st of September, correct. Also, this September month is observed as World Alzheimer Month. Then there is a theme, you can say it is time to act on dementia, time to act on Alzheimer, correct. Take a note of this. Next is International Red Panda Day. As you can see it in the picture, this is red panda. This day is observed on 21st of September, and it is basically to raise awareness about the significance of the red panda, the first panda and the only endangered panda, correct. Also, this International Red Panda Day was observed on 21st of September, correct. And as I see, this day is generally in 2024, it was observed on 21st September, but generally this day is observed on the 3rd Saturday of September, right. I repeat, this day is usually observed on the 3rd Saturday of the September month, correct. So this year 2024, it was 21st September. Last year in 2023, it was 16th September, and next year 2025, it will be on 20th of September. And for the first time, this day was observed in 2010. Next is International Coastal Cleanup Day. It is observed on 21st of September, correct. This day is also observed generally on the 3rd Saturday of September month, and this day is observed to create awareness about the coastal cleanliness and also to make awareness about the impact of pollution on the marine life. So this year in 2024, it was on 21st September. There is a theme for this, you should remember, that is hashtag See the Change. This is the theme here that you should remember for this. So students, that's all for the day. Now let's move to one-liner revision. First is PM Modi visited Jharkhand, Gujarat and Odisha. We saw this. Then Ministry of Earth Science Secretary M. Ravichandran has unveiled Integrated Ocean Energy Atlas, and this is basically determine the renewable energy that we can harness in the economic exclusive zone of India. Then Ministry of Law and Employment has increased the PF withdrawal limit to 1 lakh rupees, that was earlier 50,000 rupees. Then India and Kuwait ties, we saw that ICCR and GUST, they have signed an MOU
to teach Hindi in Kuwait. ICAIRE, they have been classified as category 2 center. That means this will be promoting research in the field of artificial intelligence research and development that will be for given guidance and operated by UNESCO. Then IDFC First Bank Limited, they have launched Ashwa and Mora. These are the two types of credit card. Next is Asian Development Bank. They have given $50 million loan for water resource management in the Meghalaya state. Then SEBI has amended and issued the listing non-convertible security rules to streamline the public issuance of debt securities. SBI has sanctioned thermal project loan of 10,050 crore rupees to DVC to develop 1600 megawatt in Koderma. Then S&P Global reported that India on the track to become the world's third largest economy by FY31 and projected annual growth of 6.7%. Karnataka, Gujarat, Tamil Nadu, they are among the best gainers from the 1990s reforms as per the data released by Economic Advisory Council to the Prime Minister. Then Bollywood producer Vinod Bachchan has been honored with the Global Prestige Award at the UK Parliament. Next, Jitendra J. Jadhav assumed the charge as the Director General of Aeronautical Development Agency. International Day of Peace observed on 21st September. World Alzheimer Day observed on 21st September. And International Red Panda Day also observed on 21st September. Then is your International Coastal Cleanup Day observed on 21st of September. So students, that's all for the day. Now let's move to some revision part that will be very beneficial in your learning. Who won the 17th edition of the Union of European Football Association, that is UEFA European Football Championship, held in Germany? It was won by Spain. Correct? So we can say Spain has won the Euro Cup for the 4th time, and Spain previously won the title in 1964, then in 2008, then in 2012, and now in 2024. That is the 4th time they have won it. Next, which country recently won the 48th edition of Copa America held in USA? It is Argentina. Copa America is related to which sport? It is related to football. And who won it? It was won by Argentina. This was the 48th edition of Copa America that was held, and Argentina has won it. Next, Indian champions team led by Yuvraj Singh won the inaugural edition of the World Championship of Legends that was hosted by England country. It was hosted from 3rd to 13th of July. This World Championship of Legend is basically, this was a tournament of cricket in which the previous cricketers or the retired cricketers took part from various countries here. And our Indian champions team has here led by Yuvraj Singh won this inaugural edition. Next, which country has recently signed a 12-year deal with the International Olympic Committee to host the first Olympic esports games in 2025? It is Saudi Arabia. Saudi Arabia will be hosting the first ever esports game, and they will be hosting this in 2025. Correct? Take a note of this. Next, name the BTS member who recently became the first ever Korean singer to carry the 2024 Paris Olympic Games torch. So who is that BTS member? Kim Seokjin, right? His stage name is Jin. He's a BTS member and he participated in the torch lay of the Paris Olympic Games. Correct? Take a note of this. And he became the first ever K-pop singer to carry a Olympic torch. Next, who has been recently appointed as the representative for South Asia in the Asian Paralympic Committee? So Deepa Malik has been appointed as the representative for South Asia in the Asian Paralympic Committee. Correct? Also remember, she is related to shot put and she became the first female para-athlete to win a silver medal in the shot put category at the Rio 2016 Paralympic Games. She was honored with Arjuna Award in 2012, Padma Shri in 2017 and Major Dhyanchand Khel Ratan Award in 2019. Next, who recently won the All India Football Federation Men's Footballer of the Year 23-24? So, Lelianzula Changate, he has won the AIFF Men's Footballer of the Year for 23-24. And Indumati
Indumati Kathresan. She is an Indian women's football player. She is from Tamil Nadu and she has been named as the AIFF Women Footballer of the Year for 23-24. And Elinzula Changate, he is from Mizoram. Both are important. Take a note on them. Next, who has recently won the bronze medal in the sabre category at the Commonwealth Junior and Cadet Fencing Championship 24 held in New Zealand? So Shreya Gupta, right? Shreya Gupta, she is an Indian fencer. She is from Jammu and Kashmir and she has won the bronze medal here in the sabre category at the Commonwealth Junior and Cadet Fencing Championship that was held in New Zealand. Next, who has recently won the F1 Hungarian Grand Prix held in Hungary? So Oscar Piastri, right, has won the F1 Hungarian Grand Prix that was held in Hungary. Next, which city has recently elected as the host of the 26th Olympic and Paralympic Winter Games for 2030? So which is that country or which is that city? To be honest, it is French Alps and the country here is France. Correct. They have been elected as the host of the 26th Olympic and Paralympic Winter Games held in 2030. The French Alps 2030 will be the first edition of the Olympic and Paralympic Winter Games to fully integrate the principles of Olympic agenda of 2020 and 2020 plus 5, focusing on sustainability. Next, one more thing, remember, this is the 26th edition we are talking about. If we talk about the 27th edition of the Olympic and Paralympic Winter Games that will be held in 2034, it will be held in Salt Lake City of Utah, that is in USA. Next, who has recently won the F1 Belgian Grand Prix held at the Stadtwald, Belgium? So Lewis Hamilton has won the F1 Belgian Grand Prix. Next, we are talking about homework. You have to give me 3 current affairs related to the finance for the last 6 months. Right? So that's all for the day, students. Do hit the like button and do comment below and let us know what are your views for the same. Now, students, let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में 24 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस के बारे में. देन हम बात करेंगे जो पीएफ विड्रॉल लिमिट है उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 50,000 रुपये थे. देन हम बात करेंगे हिंदी को प्रमोट किया जाएगा कुवैत में. देन हम बात करेंगे अश्वा एंड मौर्या, ये 2 प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा. इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड तक बने रहिएगा. आज की वीडियो में 17 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाले हैं. ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं अभी तक और हमने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. बहुत अच्छा कंटेंट डेली बेसिस पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं. सुबह 5 बजे हमारी वीडियो डल जाती है डेली बेसिस पे. एंड जो कंटेंट होता है टॉप नॉच होता है. आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इन वीडियो से देखने को मिलेगा. तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इवन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर्स पर. तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो उनका ये
थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर और ये 18वीं लोकसभा चलती है, राइट। इन्होंने झारखंड, गुजरात एंड ओडिशा में विजिट किया 15 से 17 सितंबर के बीच में, जिसके दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे। जैसे हम बात करेंगे, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया ततनगर पटना वंदे भारत ट्रेन को एट ततनगर जंक्शन, जो कि झारखंड में है। दूसरा आ जाता है, पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया एंड डेडिकेट किए वेरियस रेलवे प्रोजेक्ट्स 660 करोड़ की लागत से झारखंड में। देन तीसरा, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया 6 स्टेट ऑफ द आर्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। चौथा, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया फेज 2 ऑफ द अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। एंड फोर्थ, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, जिसको री इन्वेस्ट बोला गया, ये भी मार्क करेंगे। देन इनके द्वारा फ्लैग ऑफ की गई इंडिया की पहली नमो भारत रैपिड रेल बिटवीन अहमदाबाद एंड भुज फ्रॉम द भुज रेलवे स्टेशन। एंड यहीं पे छठी चीज़ याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सुभद्रा। इन्होंने सुभद्रा स्कीम को लॉन्च किया। ये ओडिशा स्टेट की स्कीम है। इसके अंडर आने वाले 5 साल में, दैट इज़ FY25 से लेके FY29 तक, मतलब 5 साल के अंडर यहाँ पे वीमेंस को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 50,000 मतलब हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे एंड ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सुभद्रा ये फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, स्पेसिफिकली वीमेंस को टारगेट किया जाएगा। 1 करोड़ से भी ज़्यादा वीमेंस को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की सेक्रेटरी M रविचंद्रन जी के द्वारा अनवेल किया गया इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस। एटलस बेसिकली एक तरीके का मैप ही होता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो मैप दिखा रहा है ना, ये मैप उस चीज़ का दिखा रहा है अबाउट द पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी, करेक्ट। पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी का ये मैप है इन आर इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, करेक्ट। जो हमारा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है उसमें इंडिया के आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, तो उसके यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, राइट। ये वो एरिया है, करेक्ट, जो मार्क्ड है। इसमें हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज देखने को मिलते हैं, राइट। सेक्टर्स जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, करंट एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव्स एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिनको इंडिया हार्नेस कर सकता है। उसी का ये मैप यहाँ पे दर्शाया गया है। ये मैप रिलीज किया गया है इनकॉइस के द्वारा। इनकॉइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये एक यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का, करेक्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो पब्लिक जो प्रोविडेंट फंड है उसका जो विड्रॉल लिमिट है ना, उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 50,000 रुपये था। आई रिपीट, जो पीएफ विड्रॉल लिमिट पहले 50,000 रुपये था, उसको बढ़ा के अब 1 लाख रुपए कर दिया। मतलब ईपीएफओ के अंडर अब जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना पैसा 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। इवन इसके पहले क्या होता था कि 6 महीने की लिमिट होती थी कि आप 6 महीने से पहले, जब आप एनरोल हो रहे हैं 6 महीने से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते। उस लिमिट को भी अब ख़त्म कर दिया गया है। इवन इसी के अलावा जो ईपीएफओ में पहले लिमिट होती थी कि 15,000 रुपये तक का यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्ट होगा, उसको बढ़ाकर अब 21,000 करने की बात की जा रही है। इसके लिए प्रपोजल भी यहाँ पे भेजा गया है। अगर मैं ईपीएफओ की बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगी ईपीएफओ की? वो है नीलम शामी राव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। तो इंडिया और कुवैत के टाइज हुए भी बीच में, जहां पर इंडिया से इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR एंड कुवैत से गस्ट गल्फ यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ ताकि हिंदी लैंग्वेज को वहाँ पर हम प्रमोट कर सकें एंड ICCR फर्स्ट ईयर ऑफ इंडियन स्टडीज़ कुवैत में प्रमोट की जा सके। मतलब हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हम जानते हैं कुवैत में भी बहुत सारे इंडियंस रिजाइड करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, करेक्ट। तो वहाँ पे उनके बच्चे भी होते हैं, उन बच्चों को भी हम हिंदी लैंग्वेज पढ़ा सकें, उनको भी अपनी मातृभाषा में वहाँ पे ज्ञान दे सकें, एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, इसीलिए ये MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर एक टर्म याद रखेंगे, कैटेगरी 2 सेंटर। ये बेसिकली कैटेगरी 2 सेंटर्स क्या होते हैं? ये वो सेंटर्स होते हैं जो बेसिकली यूनेस्को के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, उनकी गाइडेंस एंड सपोर्ट के अंदर चलते हैं, करेक्ट। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एथिक्स,
आई रिपीट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एथिक्स, ICAIRE, इसको AI सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए इसको C2 कैट सेंटर यहाँ पे घोषित किया गया, कैटेगरी 2 सेंटर। बेसिकली ये यूनेस्को की गाइडेंस के अंडर यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा और नए नए यूज केसेस सेटअप करेगा एंड AI के ऊपर काम करेगा। करेक्ट, तो यहाँ पे मार्क करके चलेंगे, ICAIRE क्लासिफाइड एज यूनेस्कोस कैटेगरी 2 सेंटर एट द ग्लोबल AI समिट, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हुई। ये भी मार्क करके चलेंगे कि कहाँ पर हुई थी, ये 10 से 12 सितंबर में हुई थी। कहाँ पर? रियाद सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। अभी IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा 2 नए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं, लेफ्ट और राइट में देख सकते हैं। करेक्ट, एक है अश्वा, एक है मौर्या। अश्वा लेफ्ट में रहेगा, वीज़ा पावर्ड रहेगा ये, राइट, एंड यहाँ पे राइट में देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो मोर बने हुए हैं, तो मौर्या मोर। करेक्ट, तो ये दोनों प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, मेटल क्रेडिट कार्ड रहेंगे एंड जो लग्जरियस एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड कराने के लिए इनको लॉन्च किया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो MD एंड CEO कौन रहेंगे यहाँ पर? V वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 2018 में इनको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है RBI ने अप्रूव किया V वैद्यनाथन की रीअपॉइंटमेंट एंड इनको 3 साल के लिए यहाँ पे वापस से रीअपॉइंट कर लिया गया है एंड ये इस पोजीशन में रहेंगे 18 दिसंबर 2027 तक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $50 मिलियन का लोन अप्रूव करा है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। कहाँ पर? तो जो ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होगी ना, ये स्पेसिफिकली मेघालय में, राइट, कि हम जानते हैं कि जो वहाँ पे बहुत सारी बारिश हो जाए तो हम वहाँ पे पानी को कलेक्ट कर सकें एंड जब ड्राई एरियाज आए विंटर में तो उस पानी को वापस से यूटिलाइज किया जा सके। करेक्ट, अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्लड्स भी वहाँ पर नहीं होंगी एंड जो प्रॉपर पानी का यूटिलाइजेशन है वो हो सकेगा, पानी को कलेक्ट किया जा सकेगा। करेक्ट, इसी के अंडर इस $50 मिलियन से हम देखेंगे 532 वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ को सेटअप किया जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट्स में एंड यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं जैसे आपकी गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स, जैंतिया ट्राइब्स, राइट, इन ट्राइब्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। करेक्ट, एंड इनको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा कि कैसे इन सिस्टम्स को ये अपना सकते हैं। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने अमेंड किया इशू एंड लिस्टिंग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रूल्स टू स्ट्रीमलाइन पब्लिक इशुएंस ऑफ डेट सिक्योरिटीज। करेक्ट, यहाँ पे ये जो नई गाइडलाइंस लाई गई हैं अंडर सब सेक्शन 30 ऑफ द सेबी एक्ट ऑफ 1992 लाई गई हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो टाइमलाइन है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। एज पर द न्यू रूल्स, सेबी ने जो टाइम पीरियड है पब्लिक कमेंट्स के लिए ऑन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स उसको रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 7 वर्किंग डेज टू जस्ट 1 वर्किंग डेज। करेक्ट, फॉर इशूअर्स जिनका स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया जाता था ऑन द एक्सचेंजेस, करेक्ट, उसको 7 से 1 दिन तक यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। इसी के अलावा एडवर्टीजमेंट के ऊपर हम देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट यहाँ पे अलाउ कर दिए गए हैं यूजिंग QR कोड या फिर एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स में उनको अलाउ कर दिया गया है। इवन जो नीड होती थी डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड की, उसको भी यहाँ पे रिड्यूस, उसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। SBI ने सैंक्शन किया थर्मल प्रोजेक्ट लोन वर्थ 10,050 करोड़ रुपीस टू DVC क्या है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, टू डेवलप 1,600 मेगावाट पावर प्लांट। ये जो पावर प्लांट रहेगा ये बेसिकली आपका अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट रहेगा जिसकी कैपेसिटी रहेगी 1600 मेगावाट की। 2 यूनिट्स रहेंगी इसकी 800 मेगावाट्स की। ठीक है, तो SBI ने, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, सैंक्शन किया रुपये टर्म लोन फैसिलिटी ऑफ 10,050 करोड़ रुपीस टू दामोदर वैली कॉर्पोरेशन टू डेवलप एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी रहने वाली है 1600 मेगावाट। करेक्ट, यहाँ पर कोडरमा झारखंड में एंड 2 800 मेगावाट के ये यूनिट्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। तो S&P ग्लोबल के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय FY31। यहाँ पे जो पर कैपिटा GDP है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा एंड ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हर साल हम FY31 तक 6.7% ऑन एन एवरेज की ग्रोथ
शो करेंगे, जीडीपी ग्रोथ शो करेंगे। ये डाटा किसके द्वारा, S&P ग्लोबल के द्वारा रिलीज किया गया है, न्यूयॉर्क यूएसए में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर कर्नाटका, गुजरात एंड तमिलनाडु। ये वो बिगेस्ट गेनर्स हैं फ्रॉम 1919 रिफॉर्म्स एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक वर्किंग पेपर रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि जब से स्टेट्स का लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स आए हैं 1990 से, उसके बाद हमें कर्नाटका, गुजरात एंड तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली है, राइट। यहीं पे अगर आप देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा जो इनकम है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें इन 3 स्टेट्स में देखने को मिला है, कर्नाटका, गुजरात एंड तमिलनाडु में, करेक्ट। एंड यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं ग्रोथ का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की बात करें तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर विनोद बच्चन, आप यहाँ पर इनको बीच में सेंटर में देख सकते हैं, करेक्ट। इनको ऑनर किया गया ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड के साथ एट द यूके पार्लियामेंट। आई रिपीट, बॉलीवुड प्रोड्यूसर विनोद बच्चन, इनको ऑनर किया गया है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से एट द यूके पार्लियामेंट, करेक्ट। इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा को ग्लोबली ले जाने के लिए एंड स्पेसिफिकली इन यूनाइटेड किंगडम, इसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। एंड जो ये ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड होता है ना, बेसिकली ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो अपनी फील्ड में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं एंड ग्लोबल इम्पैक्ट उससे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। तो जितेंद्र जे जाधव, इन्होंने एज्यूम किया चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, राइट। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के ये नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ताकि पीस हम ग्लोबली पहुंचा सकें एंड उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करा सकें, शांति से सब लोग जिएं। यहीं पर आप देख सकते हैं इसकी थीम रहेगी कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस एंड इस बार इसकी 25वीं एनिवर्सरी हमने 2024 में ऑब्जर्व करी। पहली बार इस डे को 1982 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे, 21 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। एल्जाइमर बेसिकली भूलने की बीमारी होती है, राइट। आपको चीज़ें भूलने लग जाते हैं, डिमेंशिया हो जाता है, करेक्ट। इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो ये एल्जाइमर भी आपको हो सकता है, सबको नहीं होता है बट काफ़ी लोगों को बड़ी एज में ये एल्जाइमर होता है। एंड इवन सितंबर को हम वर्ल्ड एल्जाइमर मंथ के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक थीम याद रखेंगे, टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन एल्जाइमर्स, करेक्ट। और इस बार हमने 10th एनिवर्सरी ऑफ ADI ऑब्जर्व करी थी 1994 में, करेक्ट जब, और इस बार हमने आप देख सकते हैं 30वीं इसकी एनिवर्सरी रही। लेकिन ये तो थी आपकी वर्ल्ड एल्जाइमर डे की जो 21 सितंबर का था, करेक्ट। 21 सितंबर को 1994 में टू सेलिब्रेट द 10th एनिवर्सरी ऑफ ADI। ADI क्या है? ये बेसिकली ADI है आपका एल्जाइमर्स डिजीज इंटरनेशनल। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि जो एल्जाइमर डे है ना, हम ऑब्जर्व करना इसको स्टार्ट किया 2010 से। तो 2010 में पहली बार हमने वर्ल्ड एल्जाइमर डे को ऑब्जर्व किया, करेक्ट। ये मार्क करके चलेंगे। तो सिंपल टर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एल्जाइमर होता क्या है, या फिर सॉरी एल्जाइमर क्या होता है। ये एक भूलने की बीमारी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल रेड पांडा डे। 21 सितंबर को ये ऑब्जर्व करते हैं। याद रखेंगे 2024 में ही हमने इसको 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया है, वरना जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 3rd सैटरडे ऑफ द सितंबर मंथ। 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर मंथ को ऑब्जर्व करते हैं। इस बार 2024 में ये 21 सितंबर को था। लास्ट ईयर 2023 में ये 16 सितंबर को था एंड इसके बाद 2025 में ये आपका 20 सितंबर को होगा, करेक्ट। एंड रेड पांडा ये वन ऑफ द स्पीशीज है जो पांडास की एंडेंजर्ड है। इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। पहली बार इस डे को 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। फिर इसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। ये 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको हम साफ रख सकें एंड जो पॉल्यूशन की वजह से जो मरीन लाइफ होती है, मरीन इकोसिस्टम होता है, उस पर जो इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम भी याद रखेंगे, सी द चेंज, राइट। सी द चेंज ये थीम रहेगी यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे की, करेक्ट। एंड इसको ऑब्जर्व कब किया जाता है? जनरली ये भी आपका 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर मंथ को ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। और इस बार 2024 में 21 सितंबर को इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर
स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पे। पीएम मोदी ने विजिट किया झारखंड, गुजरात एंड उड़ीसा में। करेक्ट। देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी डॉक्टर एम रविचंद्रन, इन्होंने अनवेल किया इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस। देन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने इंक्रीज़ किया जो पीएफ विड्रॉल लिमिट है उसको 1 लाख तक कर दिया, जो कि पहले 50,000 था। देन इंडिया एंड कुवैत टाइज की बात करें तो आईसीसीआर एंड गस्ट, इन्होंने एक एमओयू साइन किया टू टीच हिंदी इन कुवैत। देन ICAIR, इनको क्लासीफाई किया गया एज यूनेस्को कैटेगरी 2 सेंटर, ताकि AI के ऊपर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। करेक्ट। ये घोषित किया गया इनको एट द ग्लोबल AI समिट, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हुई। देन IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा अश्वा एंड मौर्य 2 क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया गया। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $50 मिलियन का लोन अप्रूव किया फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस मेघालय में। सेबी ने अमेंड किया इशू एंड लिस्टिंग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रूल्स को टू स्ट्रीमलाइन पब्लिक इशुएंस ऑफ डेट सिक्योरिटीज। SBI ने सैंक्शन किया थर्मल प्रोजेक्ट लोन्स वर्थ 10,050 करोड़ रुपीस टू दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ताकि 1600 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप किया जा सके कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये 1600 पावर प्लांट 2 यूनिट में होगा ऑफ 800 मेगावाट ईच। देन S&P ग्लोबल रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की गई, इंडिया ऑन द ट्रैक टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय FY31। एंड कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु ये बिगेस्ट गेनर्स हैं फ्रॉम 1990 रिफॉर्म्स एज पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। देन बॉलीवुड प्रोड्यूसर विनोद बच्चन, इनको ऑनर किया गया ग्लोबल प्रेस्टिजियस अवार्ड से एट द UK पार्लियामेंट। नेक्स्ट है जितेंद्र जे जाधव, इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर, इंटरनेशनल रेड पांडा डे 21 सितंबर एंड इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। प्यूमा इंडिया, इन्होंने पार्टनर किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ टू बिकम द ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक गेम्स। इनके स्पोर्ट्स वियर 100 से भी ज़्यादा एथलीट्स के स्पोर्ट्स वियर, इनके बैग्स एंड अदर एसेसरीज यहाँ पे स्पॉन्सर की गई प्यूमा के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 137th एडिशन ऑफ द विंबलडन चैंपियनशिप हेल्ड फ्रॉम 1st of July to 14th of July इन लंडन UK। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शंस ठीक रहेंगे ABC में से, ज़रा बताइए। तो यहाँ पे हमें पूछा है इनकरेक्ट, सॉरी गलत कौन सा रहेगा, तो B गलत है, A और C सही है। ये कह रहे हैं कि स्पेन के कार्लोस एल्क्रेस ने यहाँ पे जीता मेंस सिंगल टाइटल, डिफीटेड नोवेक जोकोविच ऑफ सर्बिया इन द फाइनल, बिल्कुल सही। C ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी पैटन एंड फिनलैंड की हैरी हेलियोवारा, इन्होंने मेंस डबल टाइटल को जीता बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलियाज पेयर इन द फाइनल, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन कह रहा है कि ईगा स्वातिक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीता बाय डिफीटिंग जैस्मिन पाओलिनी ऑफ इटली। तो नहीं, ईगा स्वातिक ने नहीं जीता, बारबरा ने जीता है, बारबरा के द्वारा जीता, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। अब 3 ऑप्शन ठीक है आपके। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द 17th एडिशन ऑफ UEFA यूरो कप 2024। तो यूरो कप किन के द्वारा जीता गया, स्पेन के द्वारा यूरो कप जीता गया है। ये 17वां एडिशन था यूरो कप का एंड स्पेन ने ये चौथी बार इस यूरो कप को जीता। इससे पहले इन्होंने इसको जीता था 1964 में, देन 2008 में, फिर 2012 में और अब 2024 में इनका ये चौथा टाइटल रहेगा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका हेल्ड इन USA जीता। कोपा अमेरिका किस से बिलोंग करता है, ये फुटबॉल से बिलोंग करता है एंड किसके द्वारा जीता गया, अर्जेंटीना के द्वारा कोपा अमेरिका को यहाँ पे जीता गया। कोपा अमेरिका का ये 48th एडिशन था जो अभी हुआ था। नेक्स्ट, इंडियन चैंपियंस लेड बाय युवराज सिंह। देखो इंडियन चैंपियंस क्या था कि जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स होते हैं ना हर कंट्री के, उनकी अपनी टीम बनती है एंड उनका भी ये इवेंट हुआ था। इनॉग्रल एडिशन था, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एडिशन था ये चैंपियंस का, वर्ल्ड चैंपियंस का। ये एडिशन हुआ था, किसके द्वारा होस्ट किया गया था, इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया गया था। इंडियन चैंपियंस को किसके द्वारा लीड किया गया था, युवराज सिंह के द्वारा एंड जो इनॉग्रल एडिशन था वो इंडियन चैंपियंस के द्वारा यहाँ पे जीत लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा होस्ट किया गया था, इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया गया था। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ 12-year डील विद द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2025 में। तो सऊदी अरेबिया पहली बार ई स्पोर्ट्स गेम्स को होस्ट करेगा। कब होस्ट करेगा, 2025 में होस्ट करेगा और ये एक 12 ईयर की डील साइन की गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर। तो सऊदी अरेबिया मार्क करके चलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेम द BTS मेंबर
जो पहले कोरियन सिंगर बने जिन्होंने कैरी किया 2024 के पेरिस ओलंपिक गेम्स टॉर्च को, या फिर हम कह सकते हैं ये पहले कोरियन व्यक्ति बने जिन्होंने टॉर्च को, जो ओलंपिक टॉर्च होती है, उसको कैरी करा। तो कौन रहेंगे? ये हैं किम सियोजकिन। ये एक के पॉप बैंड मेंबर हैं। के पॉप वहाँ का एक आप कह सकते हैं डांसिंग एंड सिंगिंग इवेंट टाइप होता है आपका, एक इवेंट या फिर हम बोलें तो एक जॉनर होता है, राइट। काफ़ी फेमस है के पॉप साउथ कोरिया में, इवन इंडिया में भी उसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ती दिख रही है, करेक्ट। तो उनके मेंबर किम शॉजकिन, इनके द्वारा यहाँ पे ये वो पहले मेंबर बने टू कैरी पेरिस ओलंपिक गेम्स टॉर्च। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया इन द एशियन पैरालंपिक कमेटी। तो कौन बने? वो हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये शॉर्ट पुट से बिलोंग करती हैं, एंड ये पहली फीमेल बनी थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 के पैरालंपिक गेम्स के दौरान, रियो पैरालंपिक गेम्स के दौरान। इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2012 में, पद्मा श्री से 2017 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2019 में। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 23-24 के लिए? वो हैं लेलेंजुला चंगाटे। ये मिजोरम से बिलोंग करते हैं। एंड यहीं पे बात करें AIFF वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसके द्वारा जीता गया? वो है इंदुमती कैथीसरन। ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से, एंड इनको सम्मानित किया गया। शी हैज बीन नेम्ड एज AIFF वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 23-24 के लिए। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन ब्रॉन्ज मेडल इन द सेबर कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप, जो कि न्यूजीलैंड में हुई? तो श्रेया गुप्ता, राइट। श्रेया गुप्ता ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, एंड इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता, मार्क करके चलेंगे, फेंसिंग इवेंट में। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि हंगरी में हुई? तो ऑस्कर पिएस्ट्री, राइट। इन्होंने F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं, ये मैकलैरन के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। सेकेंड पोजिशन पे कौन आए? लैंडो नॉरिस सेकेंड पोजिशन पर आए, एंड यहीं पे लुइस हैमिल्टन की बात करें, इन्होंने थर्ड पोजीशन इन्होंने सिक्योर करी। नेक्स्ट, विच सिटी हैज रिसेंटली इलेक्टेड टू होस्ट 26th पैरालंपिक एंड ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स 2030 में? तो ये फ्रेंच एल्प्स में होगा, फ्रांस में, 26वां एडिशन ऑफ द ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स। यहीं पे अगर मैं 27वें एडिशन की बात करूं तो वो कहाँ पर होगा? वो होगा आपका सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में। ये कहाँ पर है? ये आपका USA में है, ठीक है। ये मार्क करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है होमवर्क पार्ट। आपको 3 करंट अफेयर्स देने हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने हैं रिलेटेड टू फाइनेंस 3। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, नए हैं तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। बहुत अच्छा कंटेंट हम डेली बेसिस में आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी लर्निंग अच्छी हो सके एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत बेनिफिट मिल सके।